So we had shown that there exists one h by k such that the condition was satisfied. So now we have to show that there are infinitely many h by k, right? So already we have shown that one h by k satisfy this equation, right? So let h1 by k1 be any one rational number which satisfy this equation, right? So then we have shown that eta minus h by k will be less than or equal to 2n plus 1. So what we will do the other way around. We will calculate this value. So this value, now we have this number eta minus h1 by k1. So we have this value. We will calculate this value 2 over eta minus h1 by k1. So what we will do, इस value से जो immediately बड़ा natural number है, we will choose that natural number n. So what will happen? Now n is greater than this number. So again n plus 1 will be greater than this number. Let us take the reciprocal. So 1 upon n plus 1 will be greater than this number. So you see 2 upon n plus 1 will be less than this number. 2 upon 1 plus this number will be less than this number, right? So you see what will happen. So therefore what we have got, what we have got जो हमने h1 k1 rational number choose किया था, right? That rational number h1 k1 is greater than this number 2 upon n plus 1, right? So अगर हमारे पास कोई एक number है h1 k1 जो इसको satisfy करता है, so we can find this number, we can find this, so we have this corresponding relation, right? So what we will do, so now it means this act as an upper bound. अभी हमने ऊपर show किया था कि अगर मेरे पास कोई h by eta k है, so this will be less than this number. So what is happening from here? So moment we have any h1 by k1, I have always have this upper bound. Moment I have this upper bound, I have always this inequality. Or this, so n is a natural number. So if you see 2 upon n plus 1, so 2 of n is say 5. So you see this will be what? 2 upon 6. So this is 1 by 3. So you see 0.33. So 0.33 से वो सारे differences, वो सारे numbers जो 0.33 से छोटे हैं, वो इस equation को satisfy करेंगे, eta minus hk. So it means what? There are infinitely many rational numbers h by k, so that this condition is satisfied, because 0.33 से छोटे बहुत infinite many numbers are there. So it means I can find infinitely many eta minus h by k such that this equality hold. So अगर मेरे पास एक h by k है, तो उसके corresponding I can find many h by k. बेटा is it fine? Clear है बेटा सबको? Is it fine बेटा all of you? This is one is for the fractions. So continued fractions. बेटा अगर आपको याद हो, हम डिफरेंशिएशन करते थे छोटी क्लासेस में, तो कई बार क्या होता था, हमारे पास ऐसे नंबर बनते जाते हैं जो चलते जाते हैं. So these type of fractions, 1 upon 1 by 3. Say again you have 1 upon 1 by 5 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 upon 1 by 6. So you see this continues. So these type of fractions, they are known as continued fractions. So here the fractions are going on. और अगर ये fraction finite है, say suppose this stops here, so 1 by 6 के बाद ये खत्म हो गई. So you see this fraction is known as finite continued fraction. So अगर आप देखो इसमें सारे natural numbers आ रहे हैं. So I can write this as a naught plus 1 upon some a1 plus 1 upon some a2 plus 1 upon some a3 plus so on, last में 1 upon some an. So this fraction, so this fraction is made up of a naught, a1, a2, so on up to an. इसको हम ऐसे भी denote कर देते हैं in these brackets less than or greater than, or we can put square bracket also, a naught, a1, a2, an, right? So these are actually some real numbers, right? So this fraction is known as finite continued fraction, right? So basically here, since we are in number theory, we will be dealing with those finite continued fraction where these a1, a2, an are natural numbers, right? And this a naught can be integer also. But is it fine? So first, in the first part of this chapter, we'll be talking about the finite fractions, and in the second part of the chapter, we'll be talking about the infinite fractions. So very first exam theorem is every rational number can be expressed as
finite continued fraction. So every rational number can be expressed as a finite continued fraction in two ways, right? Say suppose a by b is a rational number. Say suppose this we already know now. Say suppose a by b is a rational number. हमें पता है जब हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम से वो करेंगे, so if you see a by b, so a by b is a rational number. So हमने क्या किया, a को b से डिवाइड किया, so we will get some quotient. Say the quotient is a naught and remainder. Remainder is r naught. R naught is greater than 0 and less than b. Again what we did, again हमने क्या किया, हमने b को r naught से डिवाइड किया, quotient को remainder से डिवाइड किया. जैसे हम उसमें करते थे जब हम GCD निकालते थे, तो हमारे पास कोई quotient आएगा, let the quotient is a1, remainder is r1. So here r1 will be less than r naught. Similarly हमने r naught को जो quotient था फिर से remainder से डिवाइड किया, quotient is a2, remainder is r2 and so on. This series continues. बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाली थी जीसीडी के केस में, जैसे हम वैल्यूज निकालते थे. सो इफ यू सी लास्ट तक हम चलते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमें लास्ट में दिस प्रोसेस विल क्लोज. सो rn माइनस 2, ऊपर वाला रिमाइंडर क्या होगा, rn माइनस 2 ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसको हमने डिवाइड किया rn माइनस 1 से, सम क्वेश्चन an एंड रिमाइंडर इज rn. रिमाइंडर इज 0. वर्स्ट केस में क्या होगा, लास्ट में 1 मिल जाएगा, जैसे जीसीडी हमारा 1 हो जाता है, राइट? सो दिस प्रोसेस विल एंड इन सर्टेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. आप कोई भी नंबर ले लो, आपने देखा है अगर नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 5 and 24 देयर जीसीडी विल बी 1. So last में 1 will make the remainder 0. So ultimately one stage will come when the remainder will be 0, right? So now how will we do this? Now हमने क्या लिखा था, हमने a को b से डिवाइड किया था, हमें क्वोशिएंट मिला था a naught और रिमाइंडर मिला था r naught. So you see हमने क्या किया, इस इक्वेशन को b से डिवाइड कर दिया. So what we get a by b is equal to a naught plus r naught by b. फिर हमने क्या किया था, तो अब हमने क्या किया, ये r naught को हम नीचे ले आए. So if you see this is b by r naught. Again हमने क्या किया था, हमने b को r naught से डिवाइड किया था, हमें क्वोशिएंट मिला था a1 और रिमाइंडर मिला था r1. तो अगर मैं इसको r naught से डिवाइड कर दूं तो b by r naught, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a1 plus r1 by r naught. So you see b by r naught की वैल्यू आ गई a1 plus r1 by r naught. अगेन हमने क्या किया, r1 को नीचे ले आए, so r naught by r1. So same way अगर हम करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, so हमने r naught by r1 की वैल्यू डाली, सेम वो आ गई r2 by r1. फिर हम r2 को नीचे ले आए, इस तरह चलते चलते a naught, a1, a2, a3 और लास्ट में हमारे पास 1 by a1 आ जाएगा. So you see every rational number can be written as the continued fraction, right? So this is one way, this is one way. Now second way is, you see an, right? हमें पता है an was what, an was the remainder, right? In general अगर मेरे पास कोई भी an है, an here is not that same an, so in general any an can be written as what, हम already a by b को लिख चुके हैं, a naught, a1, a2, an. तो ये वही वाला an है जो हमने ऊपर देखा है. अब an को मैं क्या लिख सकती हूँ, an minus 1 plus 1, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, an minus 1 plus 1 by 1. तो if you see अब a by b क्या बन गया, ऑलरेडी पहले a naught, a1 so on up to an था, राइट? अब क्या आ जाएगा, अब क्या बन गया, हमने क्या लिख दिया, a naught, a1, an को हमने लिख दिया an minus 1 और लास्ट में एक और 1 आ. So you see this is the second way. बेटा is it fine? बेटा is it fine? Yes, ma'am. Right? Please यहाँ पे ये an minus 1 को जो an से पहले वाला टर्म था, इससे पहले जो टर्म आएगी an को हमने लिख दिया an minus 1. So please this one an minus 1. ये जो minus 1 है ये नीचे नहीं है, इससे पहले वाली टर्म हो जाएगी an minus 1, फिर आ जाएगा an में से 1 माइनस किया एंड देन प्लस 1. ये तब हुआ अगर an हमारा 1 से बड़ा है. अगर an हमारा 1 से बड़ा है तो इन दैट केस an minus 1 will make sense. बट अगर an 1 हो गया, if an is 1,
If an is 1, then obviously what this term will be? An minus 1 plus 1 by an. ऐसे ही होता है. तो an is 1. So you see this is an minus 1 plus 1. So last term को हम क्या लिख सकते हैं? an minus 1 plus 1. तो हम an को क्या लिख देंगे? an minus 1 plus 1. So you see a naught, a1, a2, an minus 1 plus 1. So you see every rational number can be expressed as simple finite finite simple continued fraction, and that too only in two ways, not more than that. Beta, is it clear to all? Girls, clear है सबको? बच्चे clear? Let us do this next theorem, then I'll stop. You can join that session. आपके पास login ID passwords है ना बेटा? Girls, yes, no? Yes, ma'am. मैंने मैथ्यूसिज्म में डाले थे, तो please all of you join that placement session. Okay, so what is the second theorem? So next theorem says converse of our theorem. Every finite simple continued fraction. तो अगर मेरे पास finite simple continued fraction है, that represents a rational number. Every finite simple, so proof is very easy. So suppose we know this is a finite simple continued fraction, हम इसको ऐसे लिखते हैं. We will prove the result by induction on n. So if n is 1, then only I will have one term, a1. So you see a1 is what? A1. And we know a1 is a natural number, so you see this is a rational number. We are done. Now suppose the result is true for n minus 1. So इसका मतलब a1, a2, so on up to an minus 1 is a rational number. Now let us prove the result for an. So a1, a2, an क्या बन गया? a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3 plus so on. Last में क्या आ गया? Plus 1 upon an. अब देखो, एक मिनट की, so this is what? a1. So अगर आप एक मिनट के लिए देखो, this is a1 plus 1 upon. बेटा अगर आप इस नंबर को कंसिडर करो, ये जिस नंबर को मैंने स्टार लिखा है, this number double star. You see this is a2 plus 1 upon a3 plus so on up to 1 upon an. So this is some simple continued fraction जो a2 से शुरू हो रही है, a3 so on up to an तक जा रही है. और इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन में n माइनस 1 टर्म्स है. आप 2 से शुरू हो रहे हो, n तक जा रहे हो, तो n माइनस 1 के लिए तो हमने रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव किया है. ऑलरेडी वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस नंबर विल बी सम रैशनल नंबर h by k. सो यू सी दिस विल बी व्हाट? a1 plus k by h. तो अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा? a1h plus k by h. So you see this is a rational number. So that's it. We have proved the result for n. So by induction, result is true for all n. But is it fine? So every simple continued fraction, finite simple continued fraction represents a rational number. Beta clear है सबको? Girls, is it clear?